Welcome to chapter 8. Eighth chapter is one of the difficult chapters. It is one of the long chapters. Therefore, pay attention properly and keep writing all the sums which I do right now in your notebook. Write down topic number 1 or just make a star and write down ratio to percentage. Ratio to percentage. What is a ratio? Ratio is just a fraction. Write down number 1, 3 by 4 is a ratio, full stop. Therefore, 3 by 4 into 100. When you multiply ratio with 100, you get percentage. So 3 by 4 into 100, 2 2s are 4, 2 50s are 100, 2 1s are 2, 2 25s are 50, and 3 into 25, answer 75%. So 3 by 4 ratio became percentage. Simply multiply 100. 7 by 2 is a ratio. Therefore, 7 by 2 into 100 is equal to, and find the answer by cancelling with 2, 7 5s are 35 with a 0, 350 percentage. Third, keep writing 5 by 25 is a ratio. Therefore, 5 by 25 into 100, 25 4s are 100 and 5 4s are 20%. That's the first topic, how to convert ratio to percentage. Your homework is going to be a PDF which I am showing you here, and in this PDF, topic B is convert ratio to percentage. And now you know how to do it. You have to write sum number 1. 3 is to 4 matlab 3 by 4. So 3 is to 4 matlab 3 by 4 into 100, answer 75%. 9 upon 16. So 9 by 16 into 100 is equal to, all you have to do is calculate this. 2 8s are, 2 50s are, 2 4s are, 2 25s are. So you have 9 into 25 upon 4. You have to do 9 into 25 first. 225 upon 4. And then you have to divide this. 225 upon 4. 4 5s are 20. Carry 2. 4 6 are 24. Carry 1. 56.25%. 225 upon 4 सीखना पड़ेगा. You are in 8th standard now. Try कि ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े. बाय हार्ट करना सीखो. 4 upon 225. 4 5s are 20. 25. 4 6 are 24. 1 एक ज़ीरो लगा के डॉट. 4 2s are 8. 2 20. 4 5s are 20. 56.25%. 7 is to 8. 7 is to 8 मतलब 7 upon 8. 7 upon 8 का percentage is 4 2s are, 4 25s are. 7 into 25 upon 2. 175 upon 2. Learn to divide by heart. 2 8s are 16. 87.5%. And if you don't know, this is what you will do. 2 8s are 16. 2 7s are 14. 0 dot
2 5s are 10. 87.5%. So first thing you have learnt is to convert ratios to percentage, जो बी क्वेश्चन का होमवर्क है. गोइंग बैक, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 100. परसेंटेज टू रेशियो इज डिवाइड बाय 100. फॉर एग्जाम्पल, %20. तो 20% मतलब 20/100. 0 कट, 2/10, 2 से कट, the ratio is 1/5. 350%, 350/100. 0 कट, 35/10. 5 7s are 5 2s are 7/2. 75% means 75/100. 25 3s are 25 4s are. That's how you convert ratio to percentage. Copy these three sums and this is going to be your topic C. तो ये 3 sums के बाजू में B लिखो, ये 3 sums के बाजू में C. B category is converting ratio to percentage, and ratio to percentage is by multiplying 100. And question C is converting percentage to ratio, and percentage to ratio is when you divide the percentage by 100. Topic C, convert the percentage to ratio. So sum number 1, 45%. Therefore 45/100. 5 9s are 5 20s are 9/20 answer. Fifth sum 65%. मतलब 65/100. 5 13s are 5 20s are. Sixth sum 28%. उसका रेशियो 28/100. 2 से कट करो तो 14/50. फिर से 2 से कट करो 7/25. This is your answer. We have done 2 small topics, B and C. Ratio to percentage, percentage to ratio. Write down next topic A. Finding the ratio. Copy the question. Sum number 1. Find ratio of, okay, I'm going to type because my handwriting comes out bad. You have to write down. If I'm too fast, you have to pause the video and then copy the question. The first question is, if age of Raju and Ramu is 20 and 30 years, find the ratio of their age. Pause, copy the question. Age of Raju and Ramu is 20 and 30. Find the ratio of their age. Answer is ratio is Raju की एज अपॉन रामू की एज. 0 कट. Final answer 2/3. That's all. Copy second question. Height of Rama and Shama is 140 centimeter and 100 centimeter. Find the ratio of their heights. Pause the video, copy the question.
Answer is Rama divided by Shama. Rama is 140. Shama is 100. Keep a habit of writing the units. और दोनों सेंटीमीटर है तो वो कट हो जाते हैं. यहाँ पे था 20 years, 30 years. Years get cancelled. 20 upon 30, 2 by 3. सेंटीमीटर अपने आप कैंसल. 0 0 कैंसल. 14 upon 10. 2 से कट करो. 7 by 5 is the answer. Copy the third question. I have 35 sweets. Raj has 40 sweets. What is the ratio of sweets with me and Raj? Copy the question. And now question is ratio of me and Raj. Me मतलब 35 sweets upon Raj मतलब 40 sweets. Sweets cancel हो जाएगा. 35 upon 40. 5 7s are 5 8s are 7 upon 8 is the answer. Copy the question. What is the ratio of 5 rupees and 100 rupees? Simple question. तो 5 rupees और 100 rupees का ratio is 5 rupees upon 100 rupees. Rupees cut 5 upon 100 मतलब 1 upon 20. Answer. Copy the fifth question. Krisha has 40 rupees and Khushi has 50 paise. Find the ratio of money. Again, this is Krisha divided by Khushi. Krisha has 40 rupees, so write 40 rupees. Khushi has 50 paise, write 50 paise. You cannot cancel rupees and paise. मतलब ये सम स्पेशल है. यहाँ पे स्टार बनाओ, इंपॉर्टेंट लिखो और ध्यान से देखो. 40 रुपीज और 50 पैसे का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो व्हाट टू डू? 40 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम्स पैसा. 4000 पैसा मतलब 40 रुपीज और नीचे 50 पैसा है. एक बार यूनिट सेम हो गया फिर वो गायब हो जाता है. देयरफॉर 4000 अपॉन 50 से आंसर आएगा 0 0 कट. 400 upon 5, 80 upon 1 is the ratio. Unique sum because you had to convert rupees to paisa by multiplying 100. Copy the sixth sum. Time in morning is time taken to run in Ahmedabad is 10 hours. Time taken to run in Bhopal is 8.5 hours. Find the ratio of time taken in Ahmedabad versus Bhopal. Copy the question. Time taken in Ahmedabad 10 hours. Time taken in Bhopal
8.5 hours. Good thing is hour is same, therefore the units get cancelled. 10 upon 8.5 एंड 10 अपॉन 8.5 में पहले डेसिमल को निकालो. नीचे डेसिमल है तो ऊपर 10, ऊपर डेसिमल है तो नीचे 10. सो 10 इज ऑलरेडी देयर. दिस इज द ओरिजिनल 10, बट अ न्यू 10 विल कम बिकॉज 8.5 हैज बिकम 85 नाउ. 8.5 जब 85 बनता है तो डेसिमल ऊपर चला जाता है विथ 0, विच मीन्स 100 अपॉन 85. कैंसल विथ 5 and नहीं 5 ones are 5. 20 upon 17 is the answer. Number 7. Richa runs a circle in 2.5 hours. Rama runs in 6 hours. Find the ratio of time taken by Richa and Rama. Copy the question. Try to solve it yourself and then see the video. Richa 2.5 hours. Now 2.5 can be written like this. 2 2s are 4 plus 1 5 by 2, or the easiest is 2.5 matlab 2.5. I am going to choose this because it is easiest. 2.5 hours divided by time taken by Rama 6 hours. Hour same है इसलिए गायब हो सकता है और गायब होना ही चाहिए. 2.5 upon 6. Decimal becomes a 0 नीचे, और 6 तो ऑलरेडी है ही, विच इज 25 अपॉन 60. 5 by 12 is the answer. Cancel with 5. 8th sum. Hostel charge 400 rupees for food and 130 rupees for bed. Find the ratio of charge of food and bed. तो food upon bed मतलब 400 rupees upon 130 rupees. Rupees same, therefore you can go ahead. 0 cut. 40 upon 13. Copy the 9th sum. Taxi charge is 4 rupees 50 paise and rickshaw charge is 6 rupees 60 paise. Find the ratio of charges. टैक्सी चार्ज 4 रुपीज 50 पैसे, रिक्शा चार्ज 6 रुपीज 60 पैसे. रेशियो 4.5 रुपीज. 4 रुपीज 50 पैसे मतलब 4.5 एंड 6 रुपीज 60 पैसे मतलब 6.6 रुपीज. 4.5 मतलब 45 अपॉन 10 एंड 6.6 मतलब 66 और 10 ऊपर आ जाएगा. 10 cut. 45 upon 66. 3 15s are 3 22s are. Final answer is 15 upon 22. Yug takes 30 minutes to run 1 round. Khushal takes
1 hour to run one round. Find their ratio. 10th sum. Copy the question. Yug takes 30 minutes. So 30 minutes. Upon Kushal takes 1 hour. 1 hour. You cannot do anything to the sum क्योंकि यूनिट्स अलग है और यूनिट सेम करने के लिए 30 मिनट्स को मत टच करो, बट 1 आवर के साथ 60 मल्टीप्लाई करो तो वो मिनट बन जाता है. मिनट मिनट सेम, देयरफॉर 30 अपॉन 60, 0 0 कट, देयरफॉर 3 अपॉन 6, देयरफॉर फाइनल आंसर आफ्टर कैंसलेशन इज 1/2. Eleventh sum. Prince's height is 1 meter 20 centimeter and Kushan's height is 170 centimeter. Find their ratio. Pause the video, copy the question. Prince's height is 1 meter 20 centimeter. So write down 1 meter 20 centimeter. And Kushan's height is 170 centimeter. You cannot cancel the units क्योंकि ये मीटर है साथ में. So first thing, 1 meter 20 centimeter. 1 meter मतलब 100 centimeter. Plus 20 centimeter. और ये 170 सेंटीमीटर एंड 100 प्लस 20 इज 120 सेंटीमीटर अपॉन 170 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेम हो गया, देयरफॉर वो गायब हो जाएगा, 0 0 कट, 12 अपॉन 17 इज द आंसर. ट्वेल्थ सम. Krish has 130 rupees and Raj has 500 paise. Find their ratio. Krish 130 rupees, Raj 500 paise, but rupees and paise cannot be cancelled, therefore rupees को मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो वो पैसा बन जाता. नाउ पैसा पैसा इज सेम, देयरफॉर वो गायब हो जाएगा. ऊपर है 13000 अपॉन 500, 0 0 कट, 130 अपॉन 5 से कट हो सकता है, 26 अपॉन 1 इज द आंसर. So in your worksheet, the first question is find the ratio. When you do homework, you don't have to copy the question, you can write direct answers. Look at the third sum. First and second are easy. Third sum. A basket has 3 types of fruits. 32 banana, 24 chiku, 60 pears. Write down the information. 32 banana. Fruit basket में 24 chiku and 60 pears. Question is, find the ratio of number of pears to banana. Pears to banana means pears upon banana. Pears कितने हैं? 60. Banana कितने हैं? 32. 60 upon 32. 2 से कट करो तो 30 upon 16. 2 से कट करो तो 15 upon 8. That's your final answer.
A basket has 3 types of fruits: 30 banana, 20 chiku, and some pears. Some pears कितने पता नहीं बट है. Total there are 100 fruits. Don't you think you can calculate how many pears are there? 100 fruit में से 30 banana और 20 चीकू, तो 50 कम हो गए. Therefore remaining 50 are pears. Therefore you have to write this data. And now the final question: find the ratio of pears to chiku. P upon C. Pears 50, chiku 20, 0 0 cut, 5/2. Answer. So, quickly summarizing, find ratio. Write down summary. Big upon small, मतलब 500 upon 65. 500 जा 513 जा answer. Small upon big, 36 upon 450. तो 2 18 जा 36, 2 225 जा 450, 3 6 जा 18, 375 जा 225, 3 2 जा 6, 325 जा, कैंसल करते 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 फाइनल आंसर आ गया 2 upon 25. फिर लिखो डेसिमल अपॉन नंबर. 5.5 upon 121. 5.5 55 बन जाएगा, तो 121 के बाजू में एक 0 आ जाएगा. 11 5 जा 11 1 1 0 जा 5 1 जा 5 22 जा 1 upon 20. नेक्स्ट नंबर अपॉन डेसिमल is 32 upon 0.4. 32 कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 0.4 becomes 4 और एक जीरो ऊपर डेसिमल निकलेगा, और जितने भी डेसिमल प्लेसेस है उतने जीरो ऊपर आएंगे, इज इक्वल टू 80 upon 1 आफ्टर कैंसलेशन. फिर से लिखो डेसिमल अपॉन नंबर. 5.25 अपॉन 15. दो डेसिमल है इस बार, सो 525 हो जाएगा, और 15 के बाजू में दो जीरोज आ जाएंगे बिकॉज देर आर टू डेसिमल प्लेसेस. 5 से कट करो तो 105 अपॉन 300. वापस 5 से कट करो 21 अपॉन 60. 3 से कट करो 7 अपॉन 20. दैट्स द फाइनल आंसर. फिर से लिखो नंबर अपॉन डेसिमल इज इक्वल टू 26 अपॉन 1.35. ट्वेंटी सिक्स 1.35 में नीचे दो डेसिमल है तो दो जीरो ऊपर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा 135. एंड 2600 अपॉन 135, कैंसल इट विथ 5. 5 5 are 24, and 5 2s are 27. That's the answer.
मीटर अपॉन सेंटीमीटर, लिखो 5 मीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर. You cannot cancel it. You cannot cancel it because the units are different. तो पहले यूनिट सेम करने का बंदोबस्त करो. तो 5 मीटर से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा. एंड दोनों सेंटीमीटर बनने के बाद यू आर फ्री टू कैंसल वॉट एवर यू वॉन्ट. 0 0 कट, 50 अपॉन 15, 5 10s are 5 3s are 10 upon 3. Final answer. Centimeter upon meter, 60 centimeter upon 1.2 मीटर. अब ये डबल ट्रबल है बिकॉज डेसिमल भी है और मीटर सेंटीमीटर अलग अलग भी है. सो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट हैंडल द डेसिमल. 600 अपॉन 12 सेंटीमीटर अपॉन मीटर. सिर्फ डेसिमल के जीरो को ऊपर लगा दिया. नाउ 600 सेंटीमीटर, 12 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेंटीमीटर बन जाए. नाउ सेंटीमीटर इज सेम, देयरफॉर द यूनिट्स विल गो अवे एंड 600 अपॉन 1200, फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2. नेक्स्ट कैटेगरी कैन बी डेसिमल अपॉन डेसिमल. ये नीटली लिखना क्योंकि ये लिखा हुआ ही काम आएगा. दिस इज योर नोट्स. व्हेन यू आर सॉल्विंग सम्स दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर द वीडियो. डेसिमल अपॉन डेसिमल, 5.5 अपॉन 1.21. तो 5.5 becomes 55 अपॉन 10 एंड 121 और उसके जीरोज ऊपर चले जाएंगे. 0 0 कट, 55 into 10 550 upon 121. 11 50s are 11 11s are final answer 50 upon 11. So many categories are there. It can be big upon small, small upon big, decimal upon number, number upon decimal, double decimal number, number double decimal, meter centimeter. रुपया पैसा एक और ऐड करो. 70 रुपीज अपॉन 140 पैसा. रुपीज और पैसा कैंसिल नहीं हो सकते तो 70 इंटू 100 करो तो रुपीज विल बिकम पैसा. एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट. 0 0 कट, 700 अपॉन 14. 700s are 7 2s are 50 upon 1 is the final ratio. रुपीज अपॉन पैसा. और एक टाइम होता है आवर्स अपॉन मिनट्स. 6 hours upon 300 minutes. You cannot cancel because hour minutes are different. Convert hours to minutes by multiplying 60. 6 hour मतलब 6 into 60 minutes अपॉन 300 मिनट्स. मिनट होने के बाद नेक्स्ट राउंड में लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट 6 into 60 अपॉन 300. कैंसल 0 0. 6 5s are 30. 6 upon 5 is the final answer. So I think there are 3 conversions which you should write down from this summary. Write down 1 meter is 1 into 100 centimeter. 1 kg is 1 into 1000 grams. तो kg to gram करना हो तो into 1000. 1 hour is 1 into 60 minutes. और कभी मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन बिकॉज 1 minute हैज 60 seconds. और एक रह गया मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम आवर मिनट. रुपया 1 rupees is 1 into 100 पैसे. So these are conversion tricks
You have to by heart this. So make a box, keep it ready so that your homework becomes easy.